very good evening to all my higher authorities, Abhishek sir and Devashni ma'am, and a very lovely good evening to all my fellow interns. And I'm so glad that I got this opportunity and eligible enough to teach anything or something to everyone. So, am I audible to everyone? Can you please show me your thumbs up if I am audible and visible? Okay. You are audible, Kajal. Okay, thank you so much. So, today's topic the why we are conducting this session is about how to make professional notes and how to make it like what we call a good notes. So my question to all of you is how notes are recognized as professional and good. So I this is a question to all. What do you consider as a good or professional notes? You can please raise your hand and then answer. Okay. Let me explain it. Good notes are not visuals ऐड कर रखे हैं डाल दिया है जो Gen Z पसंद करते हैं. Rather, good notes means किसी complexity को आप solve करके अपनी understanding बना के उसको ऐसे present करते हैं कि सामने वाला बस देखता रह जाए कि अरे ये तो इतना आसान था. Okay. So good notes are not copied paragraphs. Rather, your personal understanding and such an explanation कि सामने वाले का बस mind blow हो जाए कि it was that easy and it was shown as a very complex problem. So in today's session, I will demonstrate through my own notes and my own presentations how good notes are made. So in a good note or a presentation or be it a professional presentation or note, what do you think is the most important thing? Visuals, how it looks, or whatever you think. Please tell me, what do you think? What is the main component of a good note? Visuals, data, I guess. Mainly the content. Yes. So, the first question I ask everybody, how you are taking your content. Like most of us use ChatGPT and some other AIs to, take content. But in order to make good notes or professional notes, one must consider personal understanding and अपने खुद के notes. When you were learning the topic, you must have made notes of your own. So अपने notes पे consider करें, अपने notes को देखें, revision करें. उसके बाद there might be some people जिन्होंने शायद notes ना बनाए हो, right? There can be. But that is something you shouldn't be disappointed about. अभी भी time है. Make YouTube your best friend. One point I always emphasize on is to make YouTube your best friend. अगर आपके पास अपने notes नहीं है, take NetSware or any other book. लेकिन just merely copying from here to here and there, this won't work. First thing that one needs to understand is like there are your moral duties. Yeah, you need to understand कि आप जो notes बना रहे हो वो सिर्फ notes नहीं है. First of all, you are not a student anymore, you are an intern. आप एक organization में work कर रहे हैं. Organization में work करने के बाद आप उस organization के representative होते हैं. And when you are representing an organization, so you will take the accountability. आपने जो notes बनाए उससे कोई बच्चा पढ़ेगा. Now you have a future in your hand. So keep that in mind and imagine yourself as a teacher when you make notes or when you create any PPT or any worksheet. Arbeitsblatt und so weiter. So let me demonstrate. First of all, we'll look at the components. I hope my screen is visible. Can somebody tell me if the screen is Yes. visible? Yes, it's visible. So here there is a presentation of a grammar topic, the adjective. And first of all, whenever you start creating a presentation, what is to be done? The first thing, you can see the logo of Global Bhasha Academy. कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आते ही इसको इंसर्ट करके सारी स्लाइड्स पे कॉपी पेस्ट मारना है. ठीक है. कोई यहाँ पे देखेंगे आप, there is no specific templates. If you are creative enough, add one, but I do not add any, only the cover page. Okay, to make it look little creative. And the second obvious thing is Einführung, the introduction of the presentation or the topic we are going to present. Make sure and keep in mind that the topic you are going to teach or maybe the other teacher who will take your PPTs, जो भी आपकी पीपीटी से पढ़ाएगा या आपके नोट्स को यूज करेगा वो तो कर लेगा क्योंकि उसे आती है, लेकिन सामने वाले का ऑब्जेक्टिवली सोचना आपने, उससे नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहा है. तो हमेशा इंट्रोडक्शन में एक जर्मन डिस्क्रिप्शन के साथ आपको इंग्लिश का भी डालना है. ठीक है. के बाद
very obvious thing, Beispiele, example sentences of any grammar topic. Now there Kajal, are, yes, ma'am. just a second. So basically, this note structure is for all the level, not only for the German. Kajal is showing as an example to all of you. Like if you will be doing it in French or Spanish, at that time also you have to tell the differences. You have to write that in not only in the German, French, Spanish, even also in Hindi. If you are making any kind of notes, first thing it should be the student friendly. The second thing, as Kajal said, that if we are writing something, so it should be clear to student, not to teacher, because teacher know already. So if you are adding something in French, for example, French adjective you are describing, so that you should also explain in English. And if your student know Hindi or any other language, so try to add that language in the PPT also. If you see everyone, this is not the PPT for the teenagers or for the childrens. It's a PPT for the standard level when you will be teaching to professionals, because as you are doing bachelor's in German language, so you will be not working in schools. Maybe some of you will be work there, but mainly you will be working for the companies, and companies also hire German, French, Spanish teachers to teach their employees. So that's it from my side. Kajal, over to you. Okay, thank you so much for adding such a valuable piece of information. So going further, there is all like why it is said that you should not take content from AI, because the very first point is that it is damaging your skills. For example, if I ask ChatGPT to give me the notes of any topic, be it any topic, ठीक है, मान लो एडजेक्टिव्स का मैंने नोट्स मांगा चैट जीपीटी से और एनी एआई आई यूज फॉर द नोट्स, तो वो मुझे ना एक बहुत लिमिटेड चीज दे. नाउ द थिंग दैट आई एडेड इन माय प्रेजेंटेशन इज, सी दिस इज दिस व्हेन आई वाज like you just remember what challenges you faced when you were learning this topic. Adjectives are something जो कि जर्मन में अगर आपने नहीं सीखे so you cannot learn German. लेकिन जब मैंने चैट जीपीटी को बोला कि आप मुझे इसके नोट्स दीजिए, तो उसने मेरे को ये नहीं दिया. दिस वाज द मोस्ट कॉमनली मेड मिस्टेक्स व्हेन लर्निंग एडजेक्टिव्स, एडजेक्टिव एंडिंग्स. तो द प्रॉब्लम इज कि जब कोई बंदा एडजेक्टिव सीखता है, उसको ये तो समझ आ जाता है कि डेयर ई डास के बाद ये आएगा, आइन के बाद ये आएगा. बट व्हाट इफ देयर आर अदर डेयर वर्ड्स एंड सम अदर वर्ड्स जो कि नहीं समझ आ रहे. ठीक है, ये बात आपको चैट जीपीटी नहीं बताने वाला. अगर आप उससे स्पेसिफिकली पूछोगे, इट विल वर्क. ठीक है, अगर मान लो आपने एडजेक्टिव एंडिंग सीखा, उसके बाद डीजर आ गया, ये दे आ गया, वेल्श, जोल्श, मानश, काइन, माइन एंड उन्ज, ऑय, ये सब आ गया, तब आप क्या एक्सप्लेन करोगे अपने स्टूडेंट को, क्योंकि आपने तो खुद नहीं पढ़ा. दिस इज वेर यू स्टक. सो आस्किंग योर सेल्फ एंड रिमेम्बरिंग योर ओन चैलेंजेस समथिंग वुड गेट यू, लाइक आपको एक अच्छी पीपीटी बनाने में बहुत हेल्प करने वाला है. क्योंकि दिस इज समथिंग, मैंने 3-4 एआई यूज करे, लेकिन मेरे को किसी ने ये वाली चीज नहीं बताई जो मेरी करंट स्लाइड पे आपको दिख रहा है. कि अगर मान लो कुछ ऐसा आ गया जो चैट जीपीटी ने नहीं दिया, तो क्योंकि ये आपका पर्सनल चैलेंज है. ठीक है, और यू मस्ट नो कि इफ एनी स्टूडेंट इज लर्निंग दिस टॉपिक, तो वो इस प्रॉब्लम से कम अक्रॉस होगा ही होगा, वो इस प्रॉब्लम के आड़े आएगा ही आएगा. तो आपने ये सब चीजें देखनी है, और ये सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये ऑलमोस्ट हर टॉपिक में है. और one thing you should keep in mind that nobody would get to know if you have used AI. सबको पता लग जाएगा. Nobody is that stupid. So if you are using AI, use of AI is not something that बिल्कुल ही allowed नहीं है. ठीक है, but you should know the difference between using AI for help and support and using AI for escaping responsibilities. For example, in a class, if there is a teacher who provides notes or any Yuvung exercises on the WhatsApp, so what students do, they just copy paste on chat gpt, and when the orally asked ki iska answer batao, uska answer batao, they cheat, they look down and answer to escape scolding, to escape responsibility. Whereas someone who is using AI to learn and support, what would do कि वो अपने आंसर्स क्रॉस चेक करने के लिए एआई का यूज कर सकता है. What we did is to solve the exercise given by the teacher, and you saw the teacher is busy, the teacher has a lot to do, he or they are unable to pay attention to you. तो आपने क्या करा, चैट जीपीटी को पूछा कि प्लीज टेल मी व्हाई देयर इज एन डे एंडिंग, व्हाई इज
आइनर why it is this, why is that. So आपने चैट जीपीटी को बोला कि मुझे समझाइए कि ऐसा क्यों आया, so that I do not want you, so that I do not seek your help every time. So this is the difference between using AI for help, learning and support, and escaping responsibility for cheating. Okay, so even if you are using AI, so the main point is कि आपको पता होना चाहिए कि से और क्या आपने लिखा है. अभी मैं जो बोल रही हूँ ये मैं अपनी कॉन्शियसनेस में बोल रही हूँ, मैंने चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट नहीं दिया कि मुझसे बुलवाया जाए, ठीक है. So you must know, you must be aware of what you are writing and what you are providing. This is the main point we need to emphasize on. Now, another things are there that you need to take care of. A good structure. A PPT always, a professional presentation always contains some structure. First, cover page. Second, introduction. Right after that, related to topic, if there is a list of prepositions. And right after that, some example sentences. अब देखिए, आपको चैट जीपीटी कभी नहीं बताएगा कि अगर आपने prepositions सिखाई है, देखो, प्योर, ओनर, गेगन, ये हमने सिखा ली, ठीक है. लेकिन आपने मेजर चेंज तो देखा ही नहीं. प्योर के बाद मिश क्यों आया, ओने के बाद डिश क्यों आया, ठीक है. सेम एज इंडाटिव प्रपोजिशन, आपने लिस्ट दी, आपने इंग्लिश में उसका मीनिंग बता दिया, लेकिन मिट के बाद मिया क्यों आया. सो दिस इज समथिंग चैट जीपीटी डजंट टीच. चैट जीपीटी डजंट अलाउ यू टू नो. आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा. यूजिंग योर ओन ब्रेन, यूजिंग योर ओन स्किल्स इज व्हाट वी एम्फसाइज ऑन. सो आप जो लिख रहे हो, कहने का सिर्फ एक मतलब है कि आपको पता हो कि आप क्या लिख रहे हो. क्योंकि इमेजिन योर सेल्फ एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड टीच somebody else, राइट. अब म्यूचुअल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं. वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ये अगर आपने अपने टाइम पर ये चैलेंज फेस किया, तो आप इसको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये भी आपको चैट जीपीटी नहीं देगा. Unterschied zwischen aus und von, डिफरेंस बिटवीन aus एंड von. ठीक है, तो ऐसे विजुअल्स के थ्रू, क्योंकि हमारी मेमोरी तब Kajal, याद रखती है. Yes, ma'am. like your screen is stuck. I cannot see the next slide. Visible now? I don't know. It's stuck on the adjective ending. Kajal, can you retry sharing and share your whole screen, not just a specific, a PPT or Chrome? Sir, I'm trying. Is it visible now? Yes, it is. Okay, so Unterschied zwischen aus und von. I hope it is visible to everybody now. So using visuals like this, because our memory takes it better. जब like, have you heard of this statement कि हमारा जो brain है वो चीजों को तब ज्यादा याद रखता है when it is shown like a movie. You are reading about or studying about World War, rather watch movie. So visuals or something like movie, videos, songs, ये हमें चीजों को better remember करने में help करते हैं. ठीक है. So use visuals like this, and one more thing, never forget the logo. Good headings, make them bold. And if we talk about the format, use this. You can see Times New Roman 18, font size 18, alignment, आप ये वाली भी use कर सकते हो. ठीक है. Gap should be only this 1.5. This is for all the PPTs I have used, I have made till now. Okay. And for the headings, this सिर्फ का heading semi bold. कोई आड़े टेढ़े फॉर्मेट में यूज नहीं करती. I try to keep it as simple as I can, and that's what make it elegant. So now, uh, the difference again is shown in a deeper way. LAN and Mitch pass. Is the slide visible? Okay. So in the LAN and Mitch pass, what we have done is to add the hyperlink of the YouTube video. When a student or a teacher is gonna click on it, the video will be open, and the YouTube will be open. Or what I have done is to take the screenshot, taken the screenshot of the video, and have added to avoid mistakes or any confusions कि हम क्या देखने वाले हैं. ठीक है. So I have made this a component of the PPT. So it is basically a song to better memorize dative and accusative prepositions. So if a student would learn from songs or from videos, it will better contribute to the memorization. And along with logo, never forget this. Okay. I again would like to add that we are the representatives, and we are representing our organization, है ना. तो आपको हमेशा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को प्रमोट करने का
कोई भी बहाना नहीं छोड़ना है. Okay, so it is visible on the screen. I have added all the address where people could connect Global Bhasha Academy, the phone number, address, mail, Instagram, every platform that you know must add it to the your PPT. And do not forget this. Okay, so these are the things that you must remember, not might, must remember. Take if you ask about the cover page, the template. I do not hustle at all. What I do is I use Pinterest में जाके कुछ भी लिखो related to Germany, proposition or the topic. आपको n number of visuals मिल जाएंगे, n number of wallpapers मिल जाएंगे, templates मिल जाएंगे, और नहीं मिल रहे तो just ask AI to create one. ठीक है? In some of my PPTs I can show you. कुछ मैंने खुद लिए और कुछ मैंने AI से भी यूज करे. मतलब मैंने like prompt दिया कि यूज इट दिस वे एंड दैट वे. सी दिस इज फ्रॉम Pinterest. और जितने भी विजुअल्स इसमें मैंने लिए हुए हैं, ये भी सारे आई हैव टेकन ऑल ऑफ देम फ्रॉम Pinterest. जब से पीपीटी बनाना स्टार्ट किए तब से अब तक सब Pinterest. और देर इज अ साइट वी कॉल बैकग्राउंड रिमूवर, फ्री है, आप उसको यूज करो. कोई इसमें पैसे नहीं लगते. आप किसी भी विजुअल को लो पीएनजी फॉर्म में, पीएनजी फॉर्म में अपलोड करके उसको फिर से डाउनलोड करो, बैकग्राउंड रिमूव करके जैसे मर्जी एडजस्ट करके अपनी स्क्रीन पे डाल दो. इट डजेंट टेक मच. लेकिन फूलिंग समवन कि हमने खुद बनाया है और आप सोचे कि पता भी नहीं लगेगा उसको तो कि ये एआई से बना हुआ है, समथिंग you should now avoid. You are not a kid anymore. So now, as a part of schneller Wiederholung, a quick revision or exam ready notes, as we need to make it kid friendly or Gen Z friendly. So what we can do is to create a mind map. ठीक है, I have used the visual of mind reading a book and some cute visuals like a dog and some other creature, holding this German flag with the logo, with a good heading and good format. तो इससे क्या होगा कि स्टूडेंट को अगर इमीडिएटली चाहिए कि कैसे लाइक एग्जाम में अगर वो बिल्कुल जाना चाहता है, उससे पहले उसको एकदम क्विक रिवीजन चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए हम एक माइंड मैप बनाते हैं. सो दिस इज हाउ, लाइक आप अपनी क्रिएटिविटी शो कर सकते हो, जरूरी नहीं है आपको यही फॉलो करना है, लेकिन दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट माइंड. एड स्मॉल पॉइंट्स that one must not forget. Einwater. So let's, the meeting is about to end in 5 minutes. I don't know what is this. We might need to start it again. Okay. So now we will proceed to creating worksheets. Okay. Please give me a minute. Again, creating an Arbeits worksheet for the students so that they could practice it. The topic you have just taught. उसके लिए भी आपको पहले तो सोचना पड़ेगा कि आपको चैट जीपीटी यूज करना है या आपके पास कोई एक्सरसाइज बुक है, या फिर आप खुद सोच सकते हो कि आप कैसे उसको एक इंटरेक्टिव एक्सरसाइज में कन्वर्ट कर सकते हो. सो व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट आइडिया? हियर यू कैन सी अगेन इन वर्ड फाइल देयर इज, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एडेड द लोगो, जो कि मतलब कोई स्कोप ही नहीं है भूलने का. ठीक है, सो लोगो तो हमेशा होना ही चाहिए, इट्स अ मस्ट. Then a proper description, Arbeitsblatt, das Präteritum, और make it colorful. थोड़ा सा अगर हम बना सकते हैं तो हमें बनाना चाहिए. ठीक है, आप देख सकते हैं. Also, everyone, please ask, write down the questions which you need to ask in the end of the session, okay? Because I'm giving all of you one related task to this session only. So is my screen visible to everyone? Arbeitsblatt, das Präteritum. Okay. So again, talking about the taking content. So first of all, again, it should not be all Chat GPT or any AI. So what you can do is to take ideas from any site, that there can be Lingua, German with Laura, and there are n number of websites, even on YouTube. I again emphasize, make YouTube your best friend. So you can get n number of ideas from there. So have a look on my exercises that I have created, wichtige Verbformen. Füllen Sie die Tabelle mit den richtigen Formen der Verben ein. So make sure that your grammatical mistakes are not there, and make it interactive कि आप जो टीचर जो भी पढ़ाएंगे वो इस
आर्बाइट्स ब्लड को शो करते हुए भी जो स्टूडेंट है उससे कम्युनिकेट कर सके, उनकी मिस्टेक्स को करेक्ट कर सके। एंड अनदर थिंग इज कि इस सब का एक टीचर रेडी ल्यूजेंस ब्लड आंसर शीट भी होनी चाहिए। ठीक है, टेबल शुड बी वेल मेड, ऑल बॉर्डर्ड। अगेन यहाँ पर आपको फॉर्मेट में टाइम्स न्यू रोमन वो लेना है फॉर्मेट। फॉन्ट साइज विल बी 12 एंड द गैप विल बी 1.5, स्पेसिंग वुड बी 1.5। ठीक है, अलाइनमेंट आपको ये वाला रखना है। ठीक है, जस्टिफाई, कंट्रोल जे। ओके, so far anyone has any questions? No, Kajal. I have a question for you. If you want to add your personal video or any hyperlink, how would you do? How to add Generally, hyperlinks? Wants to answer? there's an option in the PPT to add hyperlinks. Hmm. So I hope everybody is aware. And do you know how to add your own videos to the PPT? If you have to add your own videos, your own explanation, well, let's say you created a video of your own and you want that video to be in the PPT. So you all know how to add it into the PPT? No, Kajal. No, Kajal, you may tell us. Yes, why not? So be it any video, मैंने मैम का एक वीडियो डाउनलोड करके रखा है, I'll show you. So go to the insert. There is an option of media. Let me see if the screen is visible. Wait a minute. I don't know why my screen is not visible now. Is it visible now? Kajal, whenever You're you not face sharing your screen. try Yes. to reshare. Okay, stop and reshare. Yeah, yeah. Okay, now is it visible? So at the Yes, very ma'am. Yeah, it end, is. okay, thank you so much, everyone. So now at the very end, right here next to symbol, there is an option of media. Add any video. Okay, from your device, it must be downloaded. Mm, okay, so I have added this video from Global Bhasha Academy. Resize it as per your convenience. Let me edit again. So these are the attributes and the components you can add to your PPT. So have you all got the main idea how to add any video? So know what problem is occurring. Maybe the size of the video or maybe the storage issues is there. But remember the trick: symbol, media, add to the device. And this is something you must do to make it interactive. Now I will begin with the vocabulary. So the first point is how many efforts or how much efforts you have put to build your vocabulary. Just anyone can answer. Kumkum, Anisha, Anmol, Rishabh, Dia, Ishanika, anyone can answer. What efforts you have made till now to build your vocabulary? For example, आप एक स्टूडेंट को पढ़ा रहे हो और आपके आगे कोई ऐसा वर्ड आ जाता है जिसका मीनिंग आप खुद नहीं जानते. So how you are supposed to teach when as a teacher or as a content creator आप खुद ही नहीं जानते कि आप लिख क्या रहे हो. Talking about the vocabulary list I create, I take them from my own notes. और अगर आपके पास notes नहीं है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. Just look for them on any website, any YouTube channel.
बट द मेन थिंग इज यू शुड नो कि आप क्या लिख रहे हो. ठीक है. लेट मी शो यू माई vocabulary. Now it must be visible. Okay, here we can see listed here adjective. So there is a very clear list and I can even show my notes. ये सब मेरे notes में लिखा हुआ है. So I made notes. I know them कि ये क्या लिखा हुआ है. और एक चीज जो एज अ टास्क मैंने इसमें छोड़ी है वो है इनके इंग्लिश मीनिंग्स. यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने इंग्लिश में मीनिंग्स नहीं लिखे क्योंकि जब हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो ऐसा तो है नहीं ना कि बिल्कुल लिखना ही नहीं पड़ेगा स्टूडेंट को भी. मेहनत तो उन्हें भी करनी ही पड़ेगी. सो एज अ टास्क I didn't write the English meanings of them so that the student must search themselves. And if there is something that I could help with to improve German, use verb dictionary app. अगर आपको लगता है कि आपको vocabulary improve करने की need है for the work for yourself, so use verb dictionaries. It is available in Android and iOS both. और उसकी सबसे अच्छी बात यह है कि उसमें आपको लेवल वाइज सेंटेंसेस भी मिल जाते हैं, गेम्स मिल जाती है, फ्लैश कार्ड्स भी मिल जाते हैं. सो दैट डिक्शनरी ऐप इज अ बिग हेल्प. इफ यू आस्क आई विल शेयर द लिंक एज वेल आफ्टर द सेशन. So I believe I have covered the most of the session. So any questions till now? Kajal, Yes, what please can share. be the best structure for making a good notes? This is what my question is. Structure I just mentioned that you use first of all, Charu, imagine yourself as a student. You are completely unaware of topic, be it any topic. ठीक है. मान लो एडजेक्टिव एंडिंग आप पढ़ने जा रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है कि यार इंग्लिश में तो ये नहीं होता है एंडिंग टाइप या कुछ. ठीक है. सो यू मस्ट मेंशन इट ऑल कि हाउ एडजेक्टिव एंडिंग इन इंग्लिश एंड एडजेक्टिव एंडिंग इन जर्मन आर टू डिफरेंट थिंग्स. ठीक है. इट इज अ सब टॉपिक दो. So, if you ask about a good and the best structure, first, a good cover page. Okay. Then an introduction. Third is some example sentences. Then you should dive deep, the rules, structure, form, and justify that form. If you say subject plus this plus that, then you should justify कि जो sentence है उसमें वर्ब सेकंड पोजीशन पे आ रही है, फर्स्ट पे आ रही है, या एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं Kleinigkeiten der Sprache. The small things hard barely remember or mostly forgotten in the speaking. और कोई जल्दी से याद नहीं रखता उन्हें. जैसे null position, alte dative endungen, old dative endings. So add them as separate section. जैसे Achtung, Innensicht. ठीक है. ऐसे सेक्शंस में क्यूट सा बॉक्स बना के या कुछ भी इमेज बना के उसको ऐड करना वुड बी बेनिफिशियल एंड वुड बी काउंटेड एज अ विजुअल. ठीक है. अ, हो गया. रेगल्स टू अ फॉर्मल टू ऐड थिंग्स लाइक जैसे हमें टेबल्स बनवाए जाते हैं, ऐड देम एंड मेक देम कलरफुल. क्योंकि जो जिसे आप पढ़ाने जा रहे हो दैट स्टिल हैज अ किड माइंड. इवन हमें भी अभी भी कलर्स अच्छे लगते हैं. So if you will add colors, you will make it colorful. It will just catch the eyes. ठीक है. बंदे का अट्रैक्शन नहीं हट सकता उस चीज से. It must not feel boring. Okay, this is what my point is. Okay, so after that, in Got the it. final section, mind map, ready to like ready to catch वाले notes, जिसमें आप छोटे छोटे pointers ऐड करते हो. ठीक है. एक माइंड मैप बनाना बहुत जरूरी है. आफ्टर अगेन रिमेम्बर हु यू आर रिप्रेजेंटिंग. लोगो होना बहुत जरूरी है. ठीक है. अच्छी हेडिंग होना जरूरी है सो दैट एक क्लियर स्ट्रक्चर का पता लग सके. ठीक है. और वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक रूल इज कि पीपीटी में लॉन्ग डिस्क्रिप्शंस नहीं होते कभी भी. कभी भी नहीं होते. पीपीटी इज ऑल अबाउट स्मॉल पॉइंटर्स. लेट मी हाउ टू पुट इट. द वर्ल्ड इज फुल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज. इस दुनिया में बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं. लेकिन किसका नाम रिकॉग्नाइज्ड है? उसने जिसने उन प्रॉब्लम्स को समझा और उसको इतनी आसानी से सबके सामने रख दिया कि सबका माइंड ब्लो हो गया कि अरे ये तो इतना आसान था. जस्ट लाइक जिस हमारे साथ भी हुआ है. एक बार क्लास में जब डाटिव केस पढ़ाया गया था एंड वी वर होल्डिंग आवर हेड्स लाइक कि अरे ये तो इतना आसान था. एंड वी वॉच थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस ऑफ डाटिव केस
yet we couldn't understand the thing. But in our class, there was a teacher who came and just spoke about it, and we were like, our minds were blown. ये तो इतना आसान था. What was there? Now I can teach that if case in the same way or maybe even easier way. So आपको डिस्क्रिप्शन नहीं डालना, आपको छोटे पॉइंटर्स डालने हैं, रियल पॉइंटर्स जो शायद चैट जीपीटी भी ना समझा पाए. ठीक है. और देयर इवन चैट जीपीटी डजंट टेक अकाउंटेबिलिटी, वहां भी लिखा होता है चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, एनी एआई कैन मेक मिस्टेक्स. तो लेकिन यहाँ आपको अपने जो भी आप कंटेंट प्रोवाइड करोगे उसकी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी सब लेनी पड़ेगी. So make sure whatever you are adding to the PPT, you will be accountable for that. You will be representative of that. Okay, so talking about a good structure, we have discussed till pointers, headings, fonts, and Beispielsätze, Regel, Struktur, Tabelle, by the end mind map, exam ready, schnelle Wiederholung. And if you want to add a conclusion, जो कि वैसे भी schnelle Wiederholung में हो ही जाती है almost, add one conclusion, the last, the platform pages, follow us more and so on. And last में thank you. This is what I call a good structure. बाकी creativity has no limitations. You can add your own. ठीक है, क्योंकि कोई भी ग्रामर टॉपिक एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करता मेरे हिसाब से. बट इट मस्ट बी वेल स्ट्रक्चर्ड इनफ कि यू मस्ट रिमेम्बर व्हाट चैलेंजेस यू फेस, यू मस्ट रिमेम्बर व्हाट अ स्टूडेंट माइंड, मतलब अपने आप को एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू इमेजिन योर सेल्फ एज अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. ये मत सोचो कि तुम एक कंटेंट क्रिएटर हो, यू आर अ टीचर इन योरसेल्फ. अपने आप को पढ़ाने की कोशिश करो. दिस इज व्हाट आई इमेजिन व्हेन आई क्रिएट पीपीटीज, एंड दैट लीड्स मी टू क्रिएट दीज पीपीटीज and everything I create. So from my side, this was it, and the ground is open for more questions. If you have any questions till now, please ask. Please put your questions. Thank you, Kajal. Yes, thank you very much, Arun. Admissions open. DM or call us to join Global Bhasha Academy and start your journey.